Good morning, everyone. Good morning. Now let's move ahead. Epithelial tissue, which is the outermost covering, and mostly it may be of two types, either simple epithelium or compound epithelium. Is it clearly visible, everyone? Clearly visible? क्लियरली विजिबल ना बच्चा लोग? ओके, सो epithelial tissue, again on the basis of its structural modification, that epithelial tissue is of three types: squamous, cuboidal, columnar. Squamous epithelium, it is single thin layer having irregular boundaries. Its main function is exchange, mostly helps in filtration. Its main function is exchange or helps in filtration. Basically, this squamous epithelium, which is found in walls of, location most important, walls of blood vessels and air sacs of lungs, and helps in filtration just like alveoli and blood capillaries. So here there is squamous epithelium, and from alveoli oxygen enters over here, and from blood CO2 moves into alveoli. So that exchange of substance occurs through squamous epithelium. So location, remember, in the walls of blood vessels and air sacs of lungs. So this is about squamous epithelium. Now second is cuboidal epithelium. Again, it is single layer, and we can understand, obviously it is cube like. When we talk about cuboidal epithelium, it is cube like. Most important thing to remember in cuboidal epithelium, that nucleus is present in center. Nucleus is present in center. Now cuboidal epithelium, at its surface, if it is possess just microvilli like structure, that means if it is having brush border, right, then it is known as a brush bordered cuboidal epithelium. And if at free surface, if it is having cilia,
then it is known as a ciliated cuboidal epithelium. Brush border cuboidal epithelium, its main function is absorption, which is present in gut. So absorption is its main function, and ciliated cuboidal, its main function is unidirectional movement. So cuboidal epithelium, which is present in PCT, proximal convoluted tubules. As we know that in structure of nephron, that Bowman's capsule is present in beginning, then proximal convoluted tubules, then Henle's loop, then last distal convoluted tubules. So this is DCT, this is loop of Henle, and this is collecting duct. So whatever that PCT, its inner lining is having brush border cuboidal epithelium, and which helps in absorption. Ciliated epithelium, which is present in respiratory tract. Okay, so this is about cuboidal epithelium. Now next, the third one is columnar epithelium. Columnar epithelium. Columnar epithelium. Again, this columnar epithelium either possess brush border cell or may possess cilia. Okay, most important thing, remember, when we talk about this columnar cells, their nuclei are located at the base. Right? Little bit lamba wala. So again, it is of two type. This is brush bordered columnar epithelial tissue, and this is ciliated columnar epithelial tissue. This brush border columnar epithelial tissue is present in small intestine, and again its function is absorption. And when we talk about the ciliated columnar epithelial tissue, so it is present in fallopian tube and in respiratory tract. So this is about columnar epithelium. If it asks about pseudo stratified, pseudo means false. Pseudo stratified tissue is present in trachea. Actually, it is not multilayer, but it looks like multilayer, so it is pseudo stratified, and which is present in trachea. So this is about epithelial tissue, its type, simple epithelial tissues type, squamous, cuboidal,
and columnar. Now next is most important, remember that compound epithelium. ओके अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल सेल्स है, कॉल्यूमनर एंड क्यूबॉइडल सेल्स हैं, when they perform special function of secretion, then they are known as a glandular epithelium. क्या बोलते हैं उसको? Glandular epithelium. Now this glandular epithelium, there are two types, either unicellular or multicellular. If they are made up of single cell, then they are known as a unicellular. But if they are made up of so many cells, then it is known as a multicellular. So single cell, then unicellular, so many cells, multicellular. But their main function is secretion. उनका main function क्या है? Secretion. Okay. Now, just like when we talk about unicellular glandular cells, unicellular glandular cells, example बोले तो goblet cells, and goblet cells present in alimentary canal, and present in gastric glands, and this goblet cells secrete mucus in gastric juice. And multicellular, its example is salivary gland, having so many just vesicle like structures, so many cells. So it is multicellular. Now, second thing, remember, this gland, unicellular or multicellular, whatever, but on the basis of their mode of pouring of their secretion, कहाँ पे उनका secretion होता है, these glands may be classified into exocrine or second endocrine. According its name, either may be exocrine or may be endocrine. Exo means outside, endo means inner side. Simply जिसका secretion बाहर होता है, that is exocrine, and inner side का secretion होता है, that is endocrine. Exocrine glands
Exocrine gland secretes mucus, saliva, earwax, oil, मेमोरी ग्लैंड में से मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स and other cell products, and these products are released through ducts और ट्यूब. किसी डक्ट या ट्यूब के थ्रू वो बाहर सिक्रीट होता है. And when we talk about endocrine gland, they do not have ducts, and their product are known as the hormone, and they poured directly into fluid bathing the ग्लैंड. मतलब कि ये जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली किसी फ्लूइड में, खास करके ब्लड में वो रिलीज होता है. अच्छा, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोलने जा रही हूँ. एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के लिए ध्यान रखना कि एक एक्सेप्शनल है पेंक्रियास. अगर हम पेंक्रियास की बात करें तो पेंक्रियास इट इज एक्सोक्राइन as well as endocrine gland. One and only one pancreas. Pancreas is exocrine as well as endocrine gland. Why exocrine? तो pancreas में कुछ cells होते हैं. These cells release pancreatic juice, okay, this pancreatic juice by okay, तो follicles बोलते हैं उसको, follicles, okay. तो पेंक्रियास में जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, दिस सेल्स सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस विच इज डाइजेस्टिव जूस. बाय पैंक्रियाटिक डक्ट इट इज पास्ड विच यूनाइट विथ hepatic duct, and now when this two ducts means tubules unite and form hepatopancreatic duct, and which pass that pancreatic juice and bile juice into that cavity of duodenum. तो आप देख सकते हो कि किसी ट्यूब्यूल्स के थ्रू ये जो सिक्रीशन है किसी कैविटी में हुआ, तो ये सिक्रीशन सेल के बाहर हुआ. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड. एक्सो मीन्स आउटसाइड. किसी डक्ट के थ्रू कोई कैनाल में या कैविटी में सिक्रीट होता है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, remember that what is exocrine, मतलब कि जो भी सिक्रीशन होता है, whatever the secretion occurs outside, right? So that is known as a exocrine.
endocrine secretion. Okay. Now second, why it is endocrine? एंडोक्राइन क्यों बोला जाता है उसको? सो इन pancreas there are islets of Langerhans. They are special cells, islets of Langerhans. There are two types of cells, beta cells and alpha cells. Beta cells which secrete insulin and alpha cell secretes glucagon. We know that insulin function glucose to glycogen and glucagon function glycogen to glucose. So insulin function is glucose to glycogen and glucagon function is glycogen to glucose. Now this two secretion, insulin and glucagon, they are directly poured in blood. कहाँ पे डायरेक्ट रिलीज होते हैं? ब्लड. दैट्स वाई इट इज endocrine gland. So most important, remember, actually our main topic is what is exocrine and endocrine gland. But here I explain you why pancreas is having dual function or why it is known as a exo as well as endo secreting or endocrine gland. So it is exocrine gland as well as endocrine gland, that is pancreas. Clear up to here? So pancreas is exo as well as endocrine gland. Okay, so this is about simple epithelium. Clear बच्चा लोग? Okay, fine. Now compound epithelium. Compound epithelium, which is made up of more than one layer of cells, and so it is having limited role in secretion absorption. उसमें main वो role नहीं करता है, but its main function, this is most important, its main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस में ये सपोर्ट करता है. तो प्रोटेक्शन का फंक्शन याद रखना, कंपाउंड एपिथेलियम, राइट. एंड इवन दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन and even moist surface of buccal cavity, then pharynx, and then inner lining of ducts of salivary gland and inner pancreatic ducts. Okay, now second thing remember कि ये जो compound epithelial tissue है, may be two type. अच्छा, आपका टाइप मैंने बताया नहीं.
एक टाइप होता है ट्रांजिशनल, कि जिसका शेप चेंज होता है। कहाँ देखने मिलती है? रीनल पेल्विस एंड यूरिनरी ब्लैडर। पता है ना, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन भर जाता है तो वो फूल जाता है, फिर छोटा हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर, तो उसका शेप चेंज होता है, तो वो ट्रांजिशनल। और हम जो पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेटिफाइड और कॉलमनर, जो हमने देखा ना, राइट। ये जो कंपाउंड है वो स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल और कंपाउंड, बहुत सारे लेयर हो गए बट क्यूबॉइडल और कंपाउंड होंगे। अच्छा, ध्यान रखना, सेकंड थिंग, यहाँ पे जहाँ पे कैरेटिन का लेयर होगा उसको हम बोलेंगे कैरेटिनाइज्ड, और जब कैरेटिनाइज्ड होगा, कैरेटिन का लेयर होगा, तो वो ड्राई होगा। बट अगर नॉन कैरेटिनाइज्ड है तो इट विल मॉइस्ट, राइट। नो, कैरेटिन नहीं है तो सरफेस मॉइस्ट होगी, और अगर कैरेटिन है तो वो सरफेस ड्राई होगी, राइट। सो दिस इज अबाउट कंपाउंड एपिथेलियम। नाउ एपिथेलियल जो भी टिश्यूज है, ये एपिथेलियम टिश्यू, उसका फंक्शन क्या है? तो हमने पहले ही बोल दिया, दे हेल्ड टुगेदर विथ लिटल इंटरसेल्युलर मटेरियल, ज्वाइन करता है, राइट। और ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, राइट, दे प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड जंक्शन, राइट, एंड दिस, ये जो जंक्शन बनाते हैं विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स, सेल्स में वो जॉइंट बनाते हैं, राइट। तो जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली सेल जंक्शन, दो सेल्स को वो ज्वाइंट करता है, उसको बोलते हैं सेल जंक्शन। तो हम ये जो सेल जंक्शन है उसकी बात करें, राइट। तो जंक्शंस जो होते हैं, जो टिश्यू ज्वाइंट करती है, ये जंक्शंस 3 टाइप के होते हैं। टाइट जंक्शन, सेकंड adhering junction, and third one is gap junction. Tight junction, adhering junction and gap junction. Tight junction की बात करें, so it helps to stop substances from leaking अक्रॉस अ टिश्यू। दो टिश्यू के बीच में लीकेज ना होए वैसे वो ज्वाइन करने का काम करता है। टाइट जंक्शन, जैसे ये एक एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरी एपिथेलियल टिश्यू है, सो यहाँ पे जो है ऐसा ज्वाइंट होगा, दैट इज टाइट जंक्शन। तो यहाँ पे ऐसा ज्वाइंट होगा कि जिसकी वजह से लीकेज नहीं होगा। सेकंड, एधरिंग, इट परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप neighboring cells together, तो ऐसे सीमेंटिंग का काम करता है और दो सेल्स को ज्वाइन करता है। एडेशन मतलब ज्वाइन होना, राइट। और हमें पता है कि फिर उसमें होता है डेस्मोसोम्स, जो सब्सटेंस को मूवमेंट करने में हेल्प करता है। एंड द थर्ड वन इज गैप जंक्शन। गैप जंक्शन, इट फैसिलिटेट्स cells communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells.
and therefore do transfer of ions and small molecules or even big molecules. तो जैसे एथरिंग क्या करता है, जस्ट जॉइंट का काम करता है, राइट। फिर मैंने आपको बोला कि भाई जो डेस्मोसोम्स होते हैं, राइट, जो ज्वाइन करता है मेन, और फिर हमने वो का देखा कि गैप जंक्शन, तो गैप जंक्शन ऐसा होता है, ऐसे गैप होती है, और ऐसे गैप जंक्शन की जिसके थ्रू जो दो सेल को ज्वाइन करता है, बट वो सेल जो ज्वाइंट होता है उसमें गैप होता है, तो जिसके थ्रू जो सब्सटेंस है उसका एक्सचेंज होता है, राइट। ओके, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे एडेसिव प्रोटीन जो स्पेशल है, जिसको हमने क्या बोला, डेस्मोसोम एडेसिव प्रोटीन है, और दो सेल्स में सब्सटेंस और मटेरियल की जो एक्सचेंज होती है वो किसके थ्रू, गैप जंक्शन के थ्रू, राइट। सो दिस इज अबाउट सेल जंक्शन, 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन, टाइट जंक्शन, एथरिंग and gap junction. Okay, tight junction stop leaking across the tissue, adhering performs as a cementing, and gap junction, right, connects the cell, nearby cell, right. So this is about cell junction. Okay, second thing, एक extra चीज बोल रही हूँ कि जैसे ये आपका सेल है, राइट, सेल में नीचे से बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो ये सेल को अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जो ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं हेमीडेस्मोसोम्स। देखो, सेल टू सेल ज्वाइन करता है वो प्रोटीन डेस्मोसोम, बट सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ज्वाइन करता है वो हेमीडेस्मोसोम। So this is about connective tissue, 2 types, simple, compound. Simple के हमने टाइप देखे, cuboidal, squamous, columnar, squamous present in blood vessels, air sac, cuboidal in nephrons, right, and gland, मतलब कि फंक्शन उसका एब्जॉर्प्शन। फिर हमने कॉल्यूमनर देख लिए, राइट, और कॉल्यूमनर में हमने मतलब कि वो टाइप्स भी देख लिए, सिलिएटेड का भी, देन ग्लैंडुलर, उसमें यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, देन कंपाउंड एपिथेलियम, एंड लास्ट टाइप्स ऑफ जंक्शन। सो दिस इज अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो लाइक करना भूलना नहीं, इसको शेयर करना मेरे लेक्चर को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।